Hi friends, in our previous videos we have learned what are chemical reactions and equations with activity 1.1, 1.2 and 1.3. We have also learned the oxidation, reduction and redox reaction on the basis of classical and electronic views. In part 2nd, we have learned corrosion, rancidity, respiration and combustion more briefly. We have also done the worksheet of redox reactions. Now in today's video, we're going to continue chapter 1 chemical reaction and equation class 10th. This is part 3rd. Now what are chemical equations? Chemical equations are the symbolic form of a chemical reactions. The chemical equations can be represented by 5 ways. Skeletal equations, ionic equations, molecular equations, symbolic form and word form. Skeletal equations are also called the unbalanced equations. Unbalanced equations are the equations which are not balanced, means that the total number of atoms are not equal on the both sides. That are called the unbalanced equations or skeletal equations. Next is the ionic equations. Ionic equations are the equations which have the ions that are positive or negative charges. That are called the ionic equations. Then is the molecular equations. Molecular equations are the equations which do not have ions. For example, this equation doesn't have any ion that is positive or negative charges. But this equation has ions here and here. So this is the ionic equation and this is the molecular equations. Then is word and symbolic form. When we write name of the element, that equation is called the word equation. For example, this iron, water, here iron, water, magnetic oxide of iron and hydrogen. These all are the names of the elements. This is a compound, but all are this and this are the compounds, but all are the element. So the name of the particular element, that particular equation is called the word equation. Next is the symbolic equation. When we write the symbols of the elements, that is called the symbolic equation. So we have done the types of equations. Now in today's video, we'll also learn how to balance the equation by hit and trial methods. Now, why do we need to balance an equation? We need to balance an equation due to law of conservation of mass. This law says that a matter can neither be created nor can be destroyed. जब हम मैटर को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो हमें उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्हें दोनों साइड को इक्वल रहना होगा. So this balance concept is due to law of conservation of mass. Let's balance the equation. Number 1. Well balanced by hit and trial method. To do this, we can draw a table. Drawing a table can make balancing the equation more easier. There are 3 headings: element, reactant and product. In the first reaction, there are 3 elements: iron, hydrogen and oxygen. So we'll write here iron, hydrogen and oxygen. Now we'll write the number of atoms each element carrying in reactant and product. So let's start. Iron
पहले रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 3, हाइड्रोजन 2, प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, 1 and 4. I told you that whenever an equation or element is balanced, it means that the number of atoms are equal. तो हाइड्रोजन बैलेंस है हमारा. नाउ हम लोगों को आयरन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा. I told you hydrogen is balanced, so we have cut it. Now iron. हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई हो जाए ताकि वो दोनों नंबर इक्वल हो जाए. इसमें प्रोडक्ट बड़ा है तो हमें रिएक्टेंट में ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करना होगा जो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए. As you know, 1 into 3 equals to 3 and 3 into 1 equals to 3. तो जो हमने नंबर लिया है उसे हम लोग आयरन के आगे लगाएंगे. हमने आयरन के नीचे क्यों नहीं लगाया? Because it can indicate that iron has carried the atom earlier also as here. Sorry. As here. Now iron also. Now oxygen. Oxygen here is 1 and 4. So similarly we will 1 into 4, 4 into 1. So 4 will be here. Now ये 4 इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोजन भी 4 टाइम्स कैरी कर रहा है. जितना वो कैरी करता था उससे 4 टाइम्स, यानी 2, 2, 2, 2, दैट इज 8. इतना वो कैरी कर रहा है. ऑक्सीजन 4 कैरी कर रहा है. इसका मतलब अब हाइड्रोजन में हो गए 8. अब हाइड्रोजन इज ऑल्सो अनबैलेंस्ड. नाउ लेट्स बैलेंस इट अगेन. नाउ हियर reactant side is greater. 8 divided by 2, 2 ones are 2 fours are. So here will be 4. As 2 into 4 equals to 8. So here we have added 4. So now our equation is balanced. Now second equation. This is an ionic equation. This is very important equation. Now let's do it. There are 1 and 2 elements. Here you may see aluminium एक है तो aluminium तो बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. ओके, तो लेट्स बैलेंस इट. 1 into 2 equals 2, क्योंकि यहाँ पे 2 थे, and 2 into 1 equals to 2. तो हाइड्रोजन को हम लोग को यहाँ पे 2 लिखना है. तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया. तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बट हमारे आयंस बैलेंस नहीं है. वाई? क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में जो आयंस हैं वो हाइड्रोजन में 2 हैं और यहाँ पे है 3+. तो 2 और 3 इज नॉट बैलेंस. तो हमें ऐसा नंबर चूज करना होगा जो दोनों तरफ इक्वल हो जाए, जिससे दोनों तरफ इक्वल हो जाए. तो ये ऑड एंड इवन नंबर है, तो 3 into 2 जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं ऑड एंड इवन नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते थे, सेम वे हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो आ गया 6. तो हमें 6+ बनाना है. 2 into 3 is 6. 3 into 2 is 6. तो जैसे हम लोग किया तो हमारी नई इक्वेशन बन गई. एल्यूमिनियम फिजिकल स्टेट लिखना है. Oh, sorry, as I told you 6, because हमारे यहाँ पे 6 बन चुका है. And in the gaseous state
gives aluminium, 6 aluminium plus charge plus H2 hydrogen gas is evolved. Now इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं. You should point it out. You should point it out. पहली मिस्टेक, ये gaseous नहीं aqueous है. This is aqueous. तो दूसरी मिस्टेक ये है कि जब यहाँ पे 6 होना है तो 3 into 2 होता है तो तब 6 बनता है. तो इसीलिए यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पे 3 plus charge. तो 2 air, 3 plus and here 6 H plus. It is aqueous. It is also aqueous. Here is gaseous. So this equation is also balanced. Now, you need to practice the NCERT in text problem number 213. Remember, practice makes man perfect. So you need to practice the equations. तो एक इसमें एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो आपके 2 क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हो गए. Now, textbook and problem number 5, 6, 7, 8 should also be solved. Each question has 4 parts. मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. It means here 16 plus 4, that is 20 chemical equation. Here 21, 22. मतलब आपके तो 22 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी और जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते जाओगे टेबल बना के वैसे वैसे आपको क्लियर होंगे. देन वन टाइम विल कम दैट you will balance the equation without drawing the tables. Now we will learn types of chemical reactions. There are 3 types of chemical reactions. First is combination reaction or addition reaction and synthesis reaction. These 3 reactions are same. 2 or more elements are compound which combine together to form a new single compound are called combination, synthesis or addition reaction. मतलब कि कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जब एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो एक सिंगल जब कंपाउंड बनाते हैं उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, ये है रिएक्टेंट्स इन द सेम केसेस. ये रिएक्टेंट्स और ये है कंपाउंड प्रोडक्ट. 2 रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट देने में. तो हियर इज कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Then calcium oxide with carbon dioxide to give calcium carbonate. Here 2 reacted and here 1 product. This is a combination reaction. Now is decomposition reaction. These are reverse of addition reaction. इसमें कोई एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है 2 और या फिर 2 से ज़्यादा कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में. नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट जो हम अपनी फर्दर वीडियोस में लर्न करेंगे. So in our further videos we will learn decomposition and displacement reactions, and we will also practice previous year question papers. Thanks for watching this video. We will meet in our next class.